Assalamu alaikum. I am Akin Sumo. Today I am going to present the exam presentation of subject computer orientation and packages. My roll number is 05 MB evening program, took a 20 page. Here is a list of my 4 topics. Topic number 1 networking, topic number 2 operating system, topic number 3 modern CPUs and hardware components of microcomputer. Presented by Akin Ahmed Sumo and presented to Professor Dr. Azhar Lisha. Okay, first of all, networking, computer network. What is computer network? Computer network consists of two or more computers that are linked in order to share resources, exchange files, or allow electronic communications. मतलब ॿ या ॿ खां वधीक कंप्यूटर जेके कनेक्ट थियल हूंदा आहिनि पाण में जेको आहे सो मतलब शेयरिंग थियल हूंदी आहे उन्हनि जी जेको आहे डेटा वग़ैरह शेयर मतलब थींदो आहे उनखे कंप्यूटर नेटवर्क चइबो आहे उहो the computer सां नेटवर्क में बि लिंक थ्रू केबल्स टेलीफोन लाइन्स रेडियो वेव्स सैटेलाइट और इंफ्रारेड लाइट बीम्स वो जेको आहे सो उन्हनि जी मतिलबु जेको आहे डेटा शेयरिंग कनेक्शन उन्हनि जो जेको आहे सो थ्रू केबल्स टेलीफोन लाइन्स रेडियो वेव सैटेलाइट्स इंफ्रारेड बीम जे थ्रू बि थींदो आहे. The computer networking have opened up an entire frontier in the world of computing called the client and server model. Means here you see in the picture client request to the server and server response to the client means sending and receiving data process. Okay, devices used to connect. Here are a list of devices that are used to connect internet, routers, gateways, repeaters, bridges, hub and modem. मतलब ये मतलब devices हैं जिनके through असां internet access करे सघूं था. Internet में wiring है लेकिन routers में connect नहीं है router में असां through laptops, mobiles वगैरह में internet access करे सघूं था. Okay. Depending upon geographical area covered by a network, has a classifications of network means types of network you can say. Local area network LAN, metropolitan area network MAN, and wide area network WAN. So discuss on coming slide what is LAN. LAN मतलब name में cover with the local area network मतलब तो एक local small area में जो installation थी है. A local area network is a computer network that interconnects computers within a limited area such as residence, school, laboratories, hospitals, university campuses or office buildings. मतलब ये एक मतलब स्मॉल एरिया में जो इंस्टॉलेशन थी है जी वहाँ बिल्डिंग स्कूल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी कैंपसेस हॉस्पिटल्स वगैरह में जो ये इंस्टॉल थींदा आहिनि मतलब एक स्मॉल एरिया लिमिटेड एरिया में. There are two most common technologies is used for local area networks that are Ethernet and Wi-Fi. So what is differentiate between the Ethernet and Wi-Fi? So let's see. Here is the example of Ethernet. ये मतलब सर्वर में वायर इथरनेट हुआ जो कंप्यूटर्स डिवाइसेस वगैरह थ्रू वायर जे कनेक्शन उनखे असां इथरनेट चवंदा आहियूं ऐं ही जेकी प्रोसेस जेकी स्क्रीन ते शो थी थी हिनखे असां बस टोपोलॉजी बि चवंदा आहियूं. There are three types of topology: bus topology, star topology, and ring topology. It is a मतलब ही bus topology जो shape है. Okay, here's a example of Wi-Fi. मतलब Wi-Fi यो आता है जब वायर जरूरत ना है थ्रू असां वायरलेस राउटर वठूं Wi-Fi राउटर वठूं जंहिंजे थ्रू असां सिग्नल जे थ्रू असां इंटरनेट एक्सेस करे सघूं था. हिननि जी एतिरी रेंज न हूंदी आहे जेको आहे रेंज घटि हूंदी आहे पर इहो असां थ्रू Wi-Fi यूज़ करे सघूं था. इहो आहे Wi-Fi. Okay, now metropolitan. A metropolitan MAN is a larger than LAN. A metropolitan area network is a computer network that interconnects user with computer resources in a geographical region of the size of metropolitan network. The term MAN is applied to the interconnection of local area network in a city into a single larger network, which may then also offer efficient connection to a wide area network. Now, local area network मतलब हिन खे असां ईअं बि चई सघूं था the combination of local area networks. Local area network, two or more local area networks is called metropolitan. ॿ या ॿ खां वधीक लेन हुजनि हुनखे बि असां मेट्रोपोलिटन एरिया चई सघूं था. ठीकु आहे. ही हिकु वॾे मतिलबु त एरिया में इंस्टॉल थींदो आहे जीअं कोई सिटी हुजे. ठीकु आहे. कोई मतिलबु पर लाड़काना सिटी आहे लाड़काना सिटी खे मेन सॼे लाड़काना सिटी खे कवर करे सघे थो. मेन मां लेंस मतिलबु जेको आहे सो वेंदी माना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज़ कॉल्ड मेन. हिकिड़ो एग्जांपल आहे ॾिसो हाणे ही मेन इंस्टॉल थियल आहे. ठीकु आहे. मेन मां ई लेन बि मतिलबु वञे थो मेन खां ई कनेक्शन पंहिंजो कॉलेज लेन ॾे वञे थो फैक्ट्री ॾे स्कूल ॾे मतिलबु मेन चवण जो मक़सदु आहे कि पूरे सिटी खे कवर करे सघे थो. Okay, now wide area network. WAN. Wide area network is the largest, means larger than MAN and LAN. A wide area network is a telecommunication network that extends over a large geographic area for the primary purpose of computer networking. Wide area networks are often established with least telecommunication circuit. Means it is a combination of LAN and MANs. माना MAN and LAN माना जो combination के असां WAN चई सघूं था. ही हिकु जियोग्राफिक एरिया लार्ज एरिया इहो कवर कंदो आहे जीअं प्रोविंस खे कवर कंदो आहे WAN, कंहिं स्टेट खे कवर कंदो आहे WAN, कंहिं कंट्री खे कवर कंदो आहे या कंहिं कॉन्टिनेंट खे बि कवर करे सघे थो वाइड एरिया नेटवर्क.
ठीक है, इहो लार्जेस्ट आहे। हेयर इज़ एग्जांपल तव्हांखे ॿुधायां त लेन ऐं मेन जो कॉम्बिनेशन जेको आहे सो उहो वेन आहे। वेन मां ई मेन में कनेक्शन हुजे थो, लेन में कनेक्शन हुजे थो, so it is the largest. Here is the differentiate between these three types: LAN, MAN, and WAN. So, host, network size, speed, transmission number of computers. So, LAN is low, small, and MAN is high, larger, and WAN is higher and largest. So, सभिनी खां नंढो आहे LAN, small areas में थींदो आहे, पोइ MAN आहे normal में, पोइ जेको आहे सो WAN आहे जेको largest आहे। Okay, here is end my topic number 1. Now move on to topic number 2. Topic number 2 is operating system. What is operating system? An operating system is a collection of software or collection of programs that manage computers, hardware, resources, and provides common services for computer programs. The operating system is a vital component of the system software in the computer system application programs usually require an operating system to function. Operating system मतलब त जेको सॼे पीसी खे ऑपरेट कंदो आहे, इन जे बिना पीसी असांजो नथो हली सघे। हाणे मां हिकिड़ो सिंपल एग्जांपल थो ॾियां। ऐं असांजी जीअं यूनिवर्सिटी आहे, ठीकु आहे, यूनिवर्सिटी में हिकिड़ो सेट आहे टीचर जो, सेट ऑफ टीचर्स आहे, ठीकु आहे। उहे असांजी यूनिवर्सिटी खे हलाइनि था, को इंडिविजुअल आहिनि, को कहिड़ो सब्जेक्ट थो पढ़ाए, को कहिड़ो सब्जेक्ट थो पढ़ाए, को कहिड़ो सब्जेक्ट थो पढ़ाए, ठीकु आहे। हाणे अगरि टीचर्स कैंपस में हिकु बि टीचर न ईंदो त क्लासिस न हलंदा। मतिलबु त इहो हिकिड़ो एग्जांपल आहे, माना टीचर्स सेट ऑफ जेको टीचर्स आहे उहो असांजी यूनिवर्सिटी सां हुनखे ऑपरेटिंग सिस्टम चई सघूं था, जंहिंजे वजह सां असांजी यूनिवर्सिटी हले थी। टीचर्स जे बिना क्लासिस वग़ैरह न हलंदी, यूनिवर्सिटी हले सघंदी। त इहो हिकिड़ो एग्जांपल आहे त हे बि सेट ऑफ हिकिड़ो सॉफ्टवेयर आहे, सेट ऑफ प्रोग्राम जेको पूरे पीसी खे हलाए थो। हर सॉफ्टवेयर पंहिंजो अलॻि अलॻि वर्क कंदो आहे। जीअं माइक्रोसॉफ्ट थी वियो, या बि हिकिड़ो ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, विंडोज़ विस्टा आहे, मैकिन्टोश आहे, एंड्रॉइड आहे, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, इहे सॼा ऑपरेटिंग सिस्टम्स आहिनि। Okay, here are the types of operating system: real-time operating system, single-user, single-task operating system, single-user multitasking operating system, multi-user multitasking operating system. So we discuss firstly real-time operating system. A real-time operating system is like GPOs, general purpose operating system. Is functionally, but it's specially designed to run applications with very precious time and a high degree of reliability. मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इहो आहे जेको असांखे रिस्पॉन्स मतिलबु हिकिड़ो टाइमली रिस्पॉन्स असांखे हिकिड़ो माना विदिन सेकेंड असांखे रिस्पॉन्स ॾिए, ठीकु आहे, हुनखे रियल टाइम चइबो आहे। इहो मतिलबु हाणे पंहिंजो असांजो साइंटिफिक एप्लीकेशन्स में यूज़ थींदो आहे, रोबोटिक एप्लीकेशन्स में यूज़ थींदो आहे, जीअं असांखे रिस्पॉन्स नथी मिले। बल्कि इहो डिफेंस में बि यूज़ थींदो आहे, मिसाइल्स लाइ थ्रू सेंसर बि इहो इनपुट जेको असांखे हिन जो सेंसर में मिलंदो आहे। माना कोई मिसाइल असांजे अचे थो त हुनखे डिटेक्ट करण लाइ त कोई माना पाकिस्तान में कोई मिसाइल अचे थो ॿाहिरां, कोई मिसाइल जेको आहे उहो अटैक लाइ, त उहो असांखे उते बि असांजो रियल टाइम मैनेजमेंट जेको आहे सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम असांजो जेको आहे उहो यूज़ थींदो आहे। त असांखे उहो सेंसर जे थ्रू असांखे इंफॉर्मेशन तकड़ में ॾेई छॾींदो आहे त हे डिटेक्ट करे ॿुधाईंदो आहे त हे असांजो मिसाइल असांजे पाकिस्तान में अचे थो। त इहो उते बि इहो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम थींदो आहे। अॻिते कुझु एग्जांपल्स आहिनि, मां ॾिसां डिफाइन कयां थो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीवर्स रिज़ल्ट इमीडिएटली। हाणे हे मतिलबु हिकिड़ो प्लेन जो एग्जांपल आहे। त प्लेन पायलट जेको प्लेन में पायलट्स हूंदा आहिनि, जेको कॉन्टेक्ट हूंदो आहे कंट्रोल रूम सां एयरपोर्ट मां, उहो डायरेक्ट कंट्रोल बि आरटीओ सिस्टम जेको आहे तकड़ में, तॾहिं माना रिज़ल्ट इमीडिएटली हुनजो मिलंदो आहे। त इहो एग्जांपल आहे असांजो आरटीओ जो। ॿियो एग्जांपल आहे मिसाइल जो, हिननि खे डिटेक्ट वग़ैरह करण लाइ जेको मां ॿुधायमि, त इहो बि हिकिड़ो डिफेंस सिस्टम में असांजो आरटीओ यूज़ थींदो आहे। या असांजो हॉस्पिटल में जेको आहे सो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम लाइ बि असांजो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ थींदो आहे। Now, single user single tasking. An operating system that allows a single user to perform only one task at a time is called single user single tasking. Operating system function like printing a document, downloading images, etc. Okay. सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग जो मतिलबु आहे त सिंगल यूज़र इहो मोबाइल आहे, हुन में सिंगल यूज़र सिंगल टास्क हिकु ई कमु कंदो आहे। जीअं मां हाणे हिते हे प्रेज़ेंटेशन थो ॾियां, जस्ट मां हिते हीअ हिकु प्रेज़ेंटेशन खां ॿियो कोई बि कमु नथो कयां, मतिलबु मां ही सिंगल यूज़र आहियां, सिंगल टास्किंग थो कयां। अगरि मां हिते प्रेज़ेंटेशन ॾियां, बैकग्राउंड में मुंहिंजो कोई सॉन्ग बि हले, डाउनलोडिंग बि थिए, पंहिंजो कोई ॿी का एक्टिविटी बि पोयां हले, बैकग्राउंड में कोई फंक्शन ऑन हुजे, त उहो वरी मल्टी टास्किंग थी वेंदो। सिंगल यूज़र पर मल्टी टास्किंग थी वेंदो। सिंगल यूज़र टास्किंग जो मां एग्जांपल ॾिनो आहे, इंक्लूडिंग MS डॉट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मां पाम वॉच मतिलबु जेको हैंड तरह की काई शइ यूज़ कजे, लाइक मोबाइल, टैबलेट, इहे बि असांजा पाम ऑपरेटिंग सिस्टम आहिनि, एक्सेट्रा। इहो आहे असांजो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। Now, single user multitasking. Single user multitasking operating system allows user to perform one or more than one task at the same time. Commonly, operating systems are MS Windows, Apple Macintosh, and also Windows Vista. तो ये असांजा सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है, जिन में असां सिंगल यूज़र मल्टीटास्क करे सघूं था। हिकु ई जॻह ते काफ़ी सारा फंक्शन्स असां ऑपरेट करे सघूं था। फेसबुक यूज़ कयूं, कोई सॉन्ग्स हलायूं, कोई मूवी बैकग्राउंड में डाउनलोड थिए, ॿियो कुझु डाउनलोडिंग वग़ैरह थिए, स्कैनिंग थिए, एंटीवायरस जी, जो असां माना सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग आहे। आई एम गिविंग एग्जांपल।
ओके ये एग्जांपल है मतलब तारी सिर्फ वीडियो चैट भी आना है फोल्डर भी आना बैकग्राउंड में कोई ब्राउजर भी आना बैकग्राउंड में कोई डाउनलोडिंग वगैरह भी थे त इहो थी वियो असांजो सिंगल यूज़र मल्टीटास्क थे तो इहो पियो Now, multi-user multitasking operating system is an operating system that allows multiple users to use programs that are simultaneously running on a single network. Single network के मतलब multi program मतलब multi users operate on single network या server called terminal server. Examples ने जाके ठाए ने देखो आसो multi user multitasking operating system includes Unix. Unix है universal interactive executive and VM is vital memory system. ये असांजा देखो आसो multi-user multitasking operating systems in. Okay, now here's some examples of operating system. Computer operating system on Windows वगैरह जिन बुधा मैंने install थी ये operating system mobile phones में entry उड़ा Windows और Nokia mobiles in पांचो Apple ला उनमें Apple जो operating system हुआ 3D television में भी पांचो जो को आसो असां operating system install करा video games थी ATM machine थी ये सजा examples न operating system जा जिते operating system use थींदो आहे. Okay, here end my topic number 2. Now move on to topic number 3. Topic number 3, modern CPUs. Okay. Processor manufacturers. Four major companies make micro computer processor, namely Intel. Intel is a company that manufactures a processor. It is the oldest company and first and oldest company. And now AMD Advanced Micro Devices, Freescale Semiconductors Incorporation, and IBM International Business Machinery Incorporation. Okay, now microprocessor, Intel leading manufacturer of processors. Intel 4004 was world's first microprocessor. It is the world's first microprocessor made by Intel, named Intel 4004. Okay, IBM PC powered by Intel 8086. Now, the Intel processor current running in the market that are Centrino and Titanium. It is the names of processor Pentium, Axion, Core i5, i3, i7 is the generations. Core for business computer intelligence system. Okay, now advanced micro devices AMD. It is the main competitor to Intel. It is the main competitor to Intel. जो originally budget products, current products outperform Intel. And AMD's processor current running in the market that are Sempron, Athlon FX64, Durian Phenom, AMD A series A4, A68 is the generation, Core 6, Core 4, AMD FX. Okay, now Freescale. Freescale is a subsidiary of Motorola. It means this company is a control of Motorola. It means Motorola is a parent company and subsidiary is a daughter. So co-developed the Apple G4 powered PC, and this company developing means manufacture G4 power PC processor with Apple. ठीक है, Apple है ना company वाला मिली जो G4 processor manufactured. Currently focuses on the Linux market, and this company's current focus on the Linux market. Linux is the operating system. Okay, IBM. Historically manufactured mainframe, partnered with Apple to develop G5. It is partnered with Apple to developing a G5 processor, only G5 processor, and not others. To compare processor, mean what thing we comparing a processor मतलब केड़ी शे processor में सुठी हुजे जेको आहे सो हाई त माना वो compressor sorry processor सुठो आहे and the speed of processor जो size of cache या number of registers bit size and speed of front side bus. Okay, extending the processor's power. Extended computer boards. Extending the processor's power means increasing the power of processor. मतलब केड़ी शे जेकी processor जे power के increase कंदी आहे keyboard and mouse ports, USB ports, parallel network modem, audio, serial video and HDMI. I am giving example on next slide. This is a ports. मतलब ports जंहिंमें असां wires वगैरह cables वगैरह connect कंदा आहियूं, mouse जूं, keyboard जूं, headphone, earphone, monitor त उनखे असां जेको आहे ports चवंदा आहियूं, external ports. Okay, here ends my presentation. Topic number 3. Now move on to topic number 4. My topic number 4 is an other PPT, so I'm opening just in a minute. Okay. Okay. Here is my topic number 4. Hardware components of microcomputer. Okay. In today's computer industry, a wide variety of hardware components are available for microcomputers. Hardware computer, मतलब here is I'm mentioning some classifications of microcomputer. There are motherboard, input devices, output devices, storage devices, cards, ports and codes, and power supply. So discussed on coming slides. What is motherboard? Motherboard also is a system board. Is the most important hardware component of a microcomputer. Motherboard is so called as all the other boards. Okay,
of the computer are connected to this board. Hence, it is like a mother of all boards. Means all small boards are attached in motherboard like processor, RAM slots, sound cards, video cards, input output card that are all ports that are all attached in motherboard. That's why we call it motherboards, the mother of all boards. Okay, now input devices. Input devices are used to input data or information and instruction into RAM. The common input devices are a mouse. Mouse is the input device that we connect to the PC, and it is send information to the RAM. That's why it's an input device, and and it's a keyboard. Keyboard is also input device. इन ॿिन्ही जे अलावा असां कंप्यूटर मतलब इन ॿिन्ही जे अलावा असां कंप्यूटर ऑपरेट नथा करे सघूं. माउस जे बिना करे सघूं था, पर ॿिन्ही जे बिना असां कंप्यूटर ऑपरेट नथा करे सघूं. Okay. Joystick. Joystick is used in AutoCAD designing and video games. It is also an input device, and microphone is also an input device. I am giving a presentation through microphone. It is give me output, and that's why it is a output device. Not give me output. It is give me input. That's why it is an input device. Sorry. Okay, now output devices. Output devices mean output device hardware components which are used to display or print process information. The common input device is described below. Speaker. Speaker is the output device. Speaker are the most output devices used with computer system. Speakers are transducers that convert electromagnetic waves into sound waves. And ही जेकी ईयरफोन मां यूज़ कयां थो या ॿिन्ही में कंसिडर थींदी आहे. इनपुट में बि आउटपुट में, छो त हिन में माइक आहे, इहो इनपुट आहे. जेकी हे मूंखे आवाज़ अचे थो, इहो आउटपुट आहे. मतिलबु इहो आवाज़ जेको मूंखे अचे थो, इहो मूंखे इनपुट थो मिले. दैट्स व्हाई इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस. And printer is also a output device that includes the text, the documents, images, a combination of both. मतलब कोई डॉक्यूमेंट सा जेको आहे टाइप वगैरह करे पिक्चर वगैरह जेको आहे हुन में अटैच करे वो प्रिंट कंदा आहियूं त पेपर जे फॉर्म में असांखे हुनजो आउटपुट मिलंदो आहे. दैट्स व्हाई इट इज अ आउटपुट डिवाइस. Projector is also output. We connect projector with the PC and play a song or a movie. वो मूवी जेकी आहे जिते प्रोजेक्ट असां पंहिंजो फोकस पंहिंजो एडजस्ट कंदासीं, असांखे उते जेको आहे उते पिक्चर नज़र ईंदी न, मतिलबु असांखे हुनजो आउटपुट मिलंदो. प्रोजेक्टर हिन लाइ आउटपुट डिवाइस आहे. एंड LCD मॉनिटर इज़ आउटपुट डिवाइस जेको असांखे सॼो आउटपुट मिले थो. मॉनिटरिंग लाइ इहो असांजो कॉमन आउटपुट डिवाइस आहे. Okay, now storage device. Storage device means कई अहिड़ियूं डिवाइसिस जंहिंमें असां मेमोरी जेको आहे सो परमनेंटली या टेम्पररी असां हुन में स्टोर करे सघूं. हिनखे असां स्टोरेज डिवाइस चवंदा आहियूं. कहिड़ियूं आहिनि? हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज़ अ वेरी यूज़फुल स्टोरेज डिवाइस जेका PCs वग़ैरह में कनेक्ट हूंदी आहे. जेको आहे सो थ्रू हुनजे असां हुनजी माना स्टोर वग़ैरह हुन में डेटा वग़ैरह विझी करे सघूं था. हिन जो स्पेस काफ़ी वधि हूंदो आहे, काफ़ी मतिलबु वधीक हूंदो आहे. मूंखे नथो लॻे हार्ड डिस्क खां वधीक ॿई अहिड़ी डिवाइस आहे जंहिंजो स्पेस एतिरो वधीक ईंदो हुजे. So that's why it is a storage device. And a CD-ROM. And CD-ROM is a storage, also a storage device. पर हमें इहो आहे त जेकी डेटा असां हुन में सेव कंदासीं that will be not erased or deleted. हुन में उहा डेटा परमानेंट सेव थींदी, उहा असां रिमूव या इरेज नथा करे सघूं. Why floppy? Floppy is used in early 2000 or used in 90s, not in current time that are not used. And it is a very small capacity. It's more than I think 4.4 MB is maximum capacity. Capacity maximum 4.4 MB है ना, हम अधिक नहीं करें. यूँ यानी या यूज़ नहीं थी. Nowadays जो current generation में जो कि शेयर रन थी थे हले जो USB and memory card है storage devices इन ये भाई जो कि काफ़ी ये जो को रन थे तो इन्हें जो space भी काफ़ी घणो होता है. That's why it is a storage devices. Now cards are the printed circuit boards used to hold the chips integrated. These are many types of cards used in PC. जेके कार्ड्स हूंदा आहिनि, चिप्स हूंदियूं आहिनि, जीअं जेके मदरबोर्ड उन्हनि खे होल्ड कंदो आहे, उन्हनि खे असां जेको आहे कार्ड्स चवंदा आहियूं. एग्जांपल्स आहिनि साउंड कार्ड थी वियो, पंहिंजो असांजो वीडियो कार्ड थी वियो, कंट्रोलर कार्ड थी वियो, इनपुट आउटपुट कार्ड जेके असांजे मदरबोर्ड में अटैच थियल हूंदा आहिनि. इहे कार्ड्स पोइ उन सां असांजो हुनजा असां एक्सेस उन्हनि खे करे सघंदा आहियूं. So now ports I was discussed in previous slides. तो पोर्ट्स उहो ई हूंदा आहिनि जंहिंमें असां थ्रू माउस कीबोर्ड वग़ैरह जूं वायर्स असां हुन में कनेक्ट कंदा आहियूं. या प्रिंटर जी थी वई, या मॉनिटर जी थी वई, हेडफोन जी थी वई, सॼियूं असां कनेक्ट कंदा आहियूं पोर्ट्स में. पोर्ट्स बस हिनखे चइबो आहे. पोइ असांजो अचे थो कॉर्ड्स. Okay, alternatively referred to as a cords, connector or plug. A cable is one or more wire covered in plastic that transmit power or data between devices. Okay, there are multiple cables. Okay, cable हुआ हूंदी आहे जेके ॿ केबल्स पाण में कनेक्ट थियनि, या पोयां जेके मॉनिटर जे कनेक्ट थींदी आहे, CPU में कनेक्ट थींदी आहे. माना ॿ वायर्स जेके ॿ हीअं प्लग्स पाण में कनेक्ट थियनि, जेके प्लास्टिक जी वायर में बंदि थियल हुजनि, कनेक्ट थियनि, उनखे असां पोर्ट्स चवंदा आहियूं.
So now last, power supply. A power supply unit or power supply unit converts main AC to low voltage regulated DC power for the internal component of a computer. Some power supplies have manual switch for selecting input voltage, while other are automatic. ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ो मैनुअल हूंदो आहे, हिकिड़ो ऑटोमेटिक हूंदो आहे. मेन जेको असांजे बोर्ड खे, असांजे सीपीयू खे मेन जेको पावर ॾींदो आहे, उहो पावर सप्लाई ॾींदो आहे थ्रू पावर सप्लाई जे मिलंदो आहे. हुन पावर सप्लाई असांजो मेन जेको आहे सो जेको आहे, जेको पावर असांखे माना प्रोड्यूस कंदो आहे, जंहिंजी वजह सां असां पंहिंजो सीपीयू स्टार्ट करे सघंदा आहियूं. So it is a power supply. So thank you. Here is the end my presentation. So I hope, sir, you like my presentation, and thank you, and Allah Hafiz. Have a nice day. Thank you, sir.